for the class? Very slow. I think you forget the timings. Okay. 20. If you are aware of the timing, why can't you be ready? You know that as it is like, I would be sending you the link. There was some problem with my internet also, so I couldn't understand it last month. Okay. So we'll be continuing with the exercise. One more thing before we start with our work, I would just like to tell you that there are solved examples of the textbook, which is very, very important. Especially this chapter, solved examples are very important. There are some proving questions also. So please go through it. And if you have any doubt in that, let me know so that if explanation needed, I can take up those sums also. We're talking about solved examples. I've already sent you the PDF, okay, along with the notes, chapter PDF, NCERT textbook. So you can go through it and understand it. Okay, so welcome you all to the class. And now we begin with the session, probably the last session for this chapter, and then we'll go for the recap. Okay, yesterday we discussed about few proving questions of exercise 6.1, and I have already sent you the solution also. Right, we go further, exercise 6.2. Okay, there is only one question of proving, so we'll take it later up. And then we move on to last exercise of our textbook. So when you move on to the last exercise of the textbook, before that, quick recap. Yesterday we discussed about triangle property, that is angle sum property of a triangle, and exterior angle property. So along with the parallel lines and linear pair of angles, that is intersecting lines, angles made by intersecting lines, and parallel lines that are transversal, we have two more properties, that is about the triangles, that is angle sum property of a triangle, that is sum of the interior angle of a triangle is 180 degree, and also the exterior angle property, that is the measure of exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. Okay, so these are there with you. These are the things available to you. So methods are available for you. Now, which one to pick up, that depends on the question. So we will begin with exercise 6.3. Okay, so question number 1. Show the diagram here. What does it say? PQ and this is the diagram. I'll just draw the diagram first, and then we will be talking about the data part. Okay, it says something like this. This is P and this is X. This angle is given as 135 degree, as you could see. Okay, and here this angle is, this point is P, and this angle here is given as 110 degree. Okay, now what does it say? Side QP and side RQ of a triangle have produced 2 points S and T respectively. Now this side is extended over to S and this side is extended here to get a T, and such that we get angle SPR is 135 degree and angle PQT as 110 degree. Our question is to find angle PRQ. We need to find out this angle. Okay, now if you understand this question diagram, now which are the properties available to us? You remember, straight away you can say this exterior angle, because there is nothing but two parallel lines, right? So forget about parallel lines. Okay, so coming to the triangle, you have two properties, that is angle sum property and exterior angle property, isn't it? When we talk about exterior angle property, you know that this angle, exterior angle, will be equal to angle angle Q plus angle R. So I could use it, but neither of this, I don't have angle Q. Now, again, this sum could be done with so many different ways. Okay, 2 to 3 methods will be like, how you start. You will start first with this, from here, anywhere. The easiest and the smallest, if I go, look at this. Aren't they making linear pair here? Isn't it? They are making the linear pair. So, I could write it as by linear pair axiom. You can see that angle PQT
plus angle PQR is equal to 180 degree, and therefore angle PQR will be 180 minus PQD. How much is 180 minus PQD? That is 110. So we get angle PQR as 70 degree. Okay, and if this is 70 degrees, now I use the exterior property. So by exterior angle property, in triangle PQR, यहाँ पे which triangle? We are given it two, but I am using this one. So angle RPS. Okay, angle RPS is equal to what? This angle is equal to interior opposite angle. Angle Q plus angle R. Now this is 135. Okay, you are given with you got this one as 70. Angle Q plus angle R, that is nothing but angle PRQ, P letter name, isn't it? And therefore 135 minus 70 degrees. So how much you get is this PRQ minus angle PRQ, we get it as 13 minus 7, that is 65 degrees. I hope it is clear to you. If you want, you can take the screenshot of the solution so you can start writing. Okay. So I hope this is clear to you. The third part is clear to you. If you want, you can take the screenshot. Okay. But then I'll just copy the diagram for the second one here. Okay. So now what are you given here? This is triangle XYZ. Okay. Your angle X is given as 62 degree. Okay. And you're given that this whole angle Y is given as 54 degree. Okay. And what else is given? This OY and OZ bisect this angle Y and Z. Bisect means two equal parts को divide कर रहा है. Now, what's the question? We have to find angle OZY and angle OYZ. कहाँ है? So we have to find out this angle. First of all, is it? No. We have to find out OZY here. This one, the smaller angle. This is the question mark. And angle YOZ. Yeah, I was right. Angle this. Okay, we have to find out these two angles. Okay, so now let's do it. It's a triangle. Basically, you have got the hint. So you are having one option, that is angle sum property, isn't it? So that is sum of the three angle is 180 degree. Now look at this. Quickly explanation. Very simple thing for you. This is 62 degree. This is 54 degree. So how much is this whole? 180 minus sum of these two. So how much is sum of this two? 6 plus 5, 11. That is 116. And then you subtract this. How much you get this as? 120. So 64 degree. Yes. So you got this whole angle. And now what does it say? OY and OZ bisect the angle. Bisect means two equal parts. So this is whole is 54. So how much is this? 27 degree. ठीक है? उसी तरीके से ये हमें पूरा कितना मिला 64. So how much is this angle? Half of it 32 degree. So we get our first answer OZY as 32 degree. And now angle sum property. Angle YOZ is equal to 180 minus these two. So 180 minus 27 plus 32. So we get this difference added, and in the sum added is subtracted from this to get it as a third angle. I hope this is clear to you. Any confusion? Anybody? Any doubt? Then please discuss with me. Please ask me. Your comment will be important for me because I do read it and accordingly I explain it. Quickly, you were given the 62 degree and you were given with this 54 degree, and we are also given that OY and OZ are bisector of angles. So first step, step 1 क्या है आपका? By angle sum property, you will find out this angle Z. Okay? Okay, that's what I'm doing it here. So first 62 degree है, जैसे कि ये simple है. If I draw the diagram again, okay, you are given with this is 62 degree, this is 54 degree. Okay, so by angle sum property, अब third step explain कर दोगे. Okay, so by angle sum property, you get this third angle is 64 degree.
अब आपने ड्रॉ किया है बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर ड्रॉ किया मतलब ये हाफ हाफ हो गए, ये 64 है, तो ये हो गया 32। उसी तरीके से यहाँ पे ये 54 का हाफ, so we get this as 27, and once we have these two angles, again by angle sum property we find out. Is that clear? The angle is 54 degree. Okay, what are you given with? Look at angle Y measurement. Angle Y is given as 54 degree, and OY bisects the angle. Bisect का मतलब होता है divide into two equal parts. Okay, bisector मतलब जो बड़े वाले angle को दो equal part में divide करता है. So that's why we get angle OYZ as 54 का half, यानी कि 27 degree. I hope this is clear now. Yes, everyone. Can we move on? Okay, I'll send you the solution, so don't worry for the solution part. Okay, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ that you can take the screenshot. Remaining naturally, I would be sending you the whole all solutions, at least not in typing, but in the PDF format also. Okay, so let's move on to the third question. Okay, let's see the diagram here. Sorry, this takes time here. I hope you have got the new timetable. Okay, that would be implemented from Thursday. Okay. So the third question, it is something like this. It is given that this is AB, okay, point C, and this is E, this is E, 3 degree, and this is 35 degree. Now, question says, it is, I like the information is AB is parallel to D. This is given. It is something with parallel lines also, and with the triangle also, isn't it? So when we talk this, what are you going to see? What are you given? How will you start first? Okay, what's my hint? How will you start with the sum? So look at this. What are you given with? It's given that these lines are parallel, and when the lines are parallel, correspond. What are these type of angles? You have the pair of corresponding angles. You have the pair of alternate angles. You get two. So here it makes Z, and hence it is alternate angles. Okay, you have got the two options for equal angles. One is corresponding and alternate angles. But when we talk about Z, you could see that you can make it out that reverse Z kind of thing. And hence it is nothing but alternate angles. So we say angle BAE is equal to angle AEB. अब थोड़ा सा नेमिंग में देखना, ठीक है? एंगल AEB बोलो या एंगल CED बोलो, इट्स नॉट द सेम थिंग, क्योंकि जब मैं ऐसे रे बना रही हूँ तो मैं ये पॉइंट लूं या ये पॉइंट लूं, सो इट्स लाइक एंगल PRS तो भी यही है और एंगल QRS को तो भी यही है, तो थोड़ा सा इसका रीनेमिंग में विल बी यूजिंग इट. ओके, सो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? Alternate angles, isn't it? Don't forget Z means alternate angles. Somebody has written there as corresponding, so be very clear. And therefore, angle AED, ये दोनों equal है, and how much is given? This 35 degree. तो ये हमने लिख दिया 35 degree, और ये AED को मैं CED भी लिख सकती हूँ. Okay, so this is 35 degree. अब ये 35 है, ये 53 है. So triangle property, मतलब angle sum property, you can find out definitely the third angle. And therefore, by angle sum property, either write down the whole statement, you know, the sum of the interior angles of a triangle is 180 degree, or you write down this angle sum property in triangle CDE. The naming is important. Okay, we get angle, here the shorter one, this, I what I'm writing, angle CDCE is equal to 118 minus, ये थोड़ा सा shorter आप कर सकते हैं, is equal to 53 plus 35. So how much you get this is 180 minus 88, and 180 minus 80. So 180 minus 80 is 100, 100 minus 8, that is 92 degree. Something 45 is written, maybe. I hope this is clear to you.
Yes, everyone? Is it fine? You can take the screenshot of the solution if you need it. Okay, so that you understand it better, go through it and try to understand the question. Okay, now let's go ahead with question number. Okay, you will see the diagram if you have the textbook, otherwise I'm going to go for you. Okay, the intersecting lines are given here. It's given that this PQ and this is RS. They are intersecting each other at point T. We are given with this 95 degree. This is 40 degree. This is 75 degree. Okay, and we are supposed to find out angle SQT. एंगल SQT देख लेते हैं. SQT ये वाला हमें चाहिए. फाइन. सो अब थोड़ा सा इसको किस तरीके से देखेंगे. एक तो आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट है. लीनियर पेयर हो सकता है, वी डोंट नो. एंड तीसरा हमें ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं. फाइन. तो लेट्स गो फॉर इट. अब कहाँ से शुरू करना. तो हमें फाइंड ये करना है. ठीक है, इसका एक एंगल दिया है, तो इसका ये वाला एंगल हमारे पास हो. अच्छा देखिए, ये कुछ पैरेलल वगैरह कुछ नहीं दिया, तो पैरेलल वाला तो प्रॉपर्टी डिस्कार्ड कर दीजिए. दूसरी चीज, जब इस टाइप से लीनियर पेयर नहीं बना रहा है किसी ट्रायंगल्स के साथ, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी नहीं होगी. एक्सटीरियर के लिए आपका चाहिए ऐसे, यहाँ पे अंदर वाले एंगल के साथ 180 बनाना चाहिए, तो वो भी नहीं है हमारे पास. राइट. ओके, तो क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो यदि ये हो तो हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर सकते हैं. तो क्या ये हमें मिल सकता है, ये और ये इक्वल है, क्या ये हमें मिल सकता है. हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है. सो वी कैन फाइंड आउट दिस वन, एंड वंस वी हैव दिस वी कैन फाइंड दिस, बिकॉज़ बोथ आर इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है ना. और ये वर्टिकली ऑपोजिट से आपको ये मिल गया. यू हैव 2 एंगल्स, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड वी गेट दिस. सो आपको क्या करना है, पहले आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्सेप्ट यूज करना है, और फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है. सो 3 steps you get your answer. I hope this is clear to you. So how do you write a solution for this quickly? I hope you got this. In triangle PRT, by angle sum property, okay, we get angle PTR as 180 minus 95 plus 40. कितना हो जाएगा 95 plus 40? Okay, minus 9 and 4, 30, 135 degrees. So yes, this will come as 45 degrees. Okay, now angle PTR is equal to angle STQ, vertically opposite angles, and इसलिए आपको angle STQ कितना मिल रहा है, वो भी 45 मिल रहा है. And now you get this as 45. So again by angle sum property you get the third one. Yes. So 45 and 75, 4 and 7, 11, 20. So 180 minus 120, we get this as 60 degree. Very true. Fine. So again by angle sum property, you get this as 60 degree. I hope this is clear to everyone. I've not written the step, but I hope you understood the steps how to do it. Yes, children. Is it clear to you? Can we move on to the next one? Okay, and now look at the other question. Okay, so the fifth one. Okay, what does it say? The diagram is okay. It's given that perpendicular is a, parallel is there. Okay, let's see what is it. It's not so close. Okay, it's given this is 90 degree. Okay, और ये हमें दिया हुआ यहाँ पे Q S. This is given as P, and this is R, and this is T. We are given with this angle as 65 degree. This value is Y.
ये वाला है x, तो ऑब्वियसली हम x और y में कुछ फाइंड करना है, ये है 28. Okay, now let's see the data. PQ is perpendicular to PS. PQ perpendicular to PS. So the angle 90 का है. As you could see here. Okay. PQ is parallel to SR. दिख रहा है आपको PQ parallel to SR कहाँ है? Okay. तो ये दो लाइंस parallel हैं एक दूसरे के साथ. Okay. ये parallel का notation है. Second, you are given the SQR is 28 degree. Then find the value of ये जो दिया हुआ है यहाँ पे this angle QRT 65 degree. And find the value of x and y. x भी find करना, y भी find करना. तो यहाँ ये 90 डिग्री है, पर हमारे पास ये दोनों नहीं है. तो फर्स्ट में तो हम करेंगे नहीं कुछ. अच्छा, अब देखिए सारे पहले मैं उसको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है. ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस है तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, तीनों एंगल्स के ऑप्शंस आ रहे हैं. काइंड ऑफ जेड भी दिख रहा है, इंटीरियर एंगल भी दिख रहा है. ओके, ये दो तो मुझे दिख रहे हैं. फाइन, तो पैरेलल लाइंस यूज हो सकता है. एक्सटीरियर एंगल भी दिख रहा है. ये ट्रायंगल को लूं तो ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल भी दिख रहा है. ओके, एंगल्स हम प्रॉपर्टी भी दिख रही है. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन शायद नहीं है तो मे बी, पर नहीं है तो यहाँ पे नहीं है तो अभी आ सकता है. तो अब देखिए आपके पास क्या है, पैरेलल लाइंस है विद विद ऑल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, एक ऑप्शन ये है. फिर ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल. फाइन, और तीसरा है हमारे पास लीनियर एंगल्स. तो अब हम जाते कहां से, हाउ टू स्टार्ट विद इट, दैट्स द मेन थिंग टू यू. ओके, सो बिगिन हम कहां से करें. ओके, सो इफ आई गो लाइक दिस, अंदर अंदर मैं जा रही हूँ, तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है. ओके, तो इस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो इसको छोड़ के इन दोनों के बराबर होगा, इजंट इट. तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो आपके पास तो ये नहीं है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे यूज हो सकता है. Yes, Pragati, you're right that this angle is equal to sum of this. पर हमारे पास ये दोनों ही नहीं है. Okay, then how will you begin? Can anybody have the judgment कि कैसे ये sum start होगा? अच्छा, मेरी तरफ से पूरी नेट क्लियर है. अब जो भी है यही है. So try to manage it. Come on, how will you start with the sum quickly? Yes. You are given with this angle, exterior angle, ये है आपके पास, तो आपके पास ये आ जाएगा. Okay, so 65. Okay, what is it? You just write down the steps again. In triangle, which is it? S Q R by exterior angle property. We get angle QRT as angle SQR plus angle RSQ. Okay, so we get this is 65 degree minus 28 degree is equal to what? हमारे पास ये आ जाएगा angle RSQ. Okay, now angle RSQ is equal to 65 minus 28. So 37 degree, isn't it? ये हमारा आ गया 37 degree. So we got this as 37 degree. अब कुछ दिख रहा है? क्या मैं पैरेलल लाइंस के लिए जा सकती हूँ? Isn't it? Look at this part. PQ is parallel to RS. And if I take this as a transversal, how much I take this as? Isn't it making Z here? I don't know what are you writing. Sometimes 40 degree, 50 degree. Show me कहाँ हो? Okay. And यहाँ पे आप देखिए ये Z बना रहा है. And hence X is equal to 37Q by alternate angles. Okay. और Q के पहले PQ is parallel to RS and QS is a transversal. Okay, तो आपके लिए X is equal to 37 है. दूसरी चीज आपको क्या पता है? तो फिर ये 90 डिग्री का तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए. ओके, ये चीज यहाँ पे आप देखिए, ये दिस इज 90 डिग्री और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये भी 90 डिग्री होगा टोटल. ओके, तो ये जब टोटल 90 डिग्री, आप इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 180 माइनस 90, और यहाँ पे 90 माइनस 37 करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी. आई होप दिस इज क्लियर. आई एम राइटिंग इट डाउन सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. आल्सो PQ पैरेलल टू RS is equal to 180 degree. ये क्या है यहाँ पे? इंटीरियर एंगल्स कॉन्सेप्ट. ओके,
I don't understand आप लोग कौन सा प्रॉपर्टी लिख रहे हो. आदित्य there is some mistake, please check. इंटीरियर एंगल्स कॉन्सेप्ट. तो एंगल पी therefore एंगल एस यानी कि मैं थ्री लेटर मीनिंग करता हूँ एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी कि हमारा पी एस आर हमें मिला 90 डिग्री. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट से इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये पूरा दोनों मिला के इतना है ना, y and 37, and therefore y will be equal to 90 minus 37. Okay, so y कितना हो गया 90 minus 36, 60 minus 7, that is 53 degree. I hope this is clear to all of you. Okay, some of you are writing the answers, but बाकी मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे हो. Okay, Pragati, what are you writing? The sum of consecutive interior angles to the same side of transversal. ये कौन सा इतना कौन सी प्रॉपर्टी? सिंपली से इंटीरियर एंगल्स. कंसेक्यूटिव क्या होता है इसमें? सिंपली आई हैव टॉट यू द नेम्स. प्लीज ये जो आपका है ना कॉन्सेप्ट, सम ऑफ द टीचर्स आर जस्ट यूजिंग द रॉन्ग. ये सेम साइड वाला कॉन्सेप्ट प्लीज मत ही रखिए. इट्स अ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट और उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स दोनों आ रहे हैं. मैंने बेसिक्स में ही बता दिया है. आई डोंट वांट टू नेम इट, बट देयर आर फ्यू जो ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड चिल्ड्रन गॉट wrong, marks deducted in the first sem last year. So be very clear. Okay, Pragati, be very careful, please. So I hope this is clear to you how to solve this sum. Okay. अभी फिर मेरी तरफ से इंटरनेट का कोई इश्यू नहीं है बेटा. आप लोगों का फिल्टर कर रहा होगा तो हो सकता है इट्स अ प्रॉब्लम, बट यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो अब ये जो आपके सम्स है, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कैसे कर रहा है. ठीक है, होगा कि यू आर गिवन विद सो मेनी थिंग्स. ओके, आपको यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन कि कहां से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा. ओके शोभित, आई विल ट्राई, बट प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, देयर इज सम इशू. आई डोंट नो व्हाट इज द इशू विद द इंटरनेट. सो यस आदित्य, ये मैंने पहले ही कहा कि वी कैन स्टार्ट विद अदर वेज आल्सो. किसी और मेथड से ट्राई कर सकते हो. मेथड में भी यही है कि विच वन यू स्टार्ट फर्स्ट. पहले तुमने पैरेलल लाइंस और इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट ले लिया एंड देन यू गो आउट, तो स्टेप्स ऊपर नीचे होंगे. मेथड मतलब कोई यहाँ पे ऐसा चाहिए कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर हम नहीं ले रहे. इज दैट क्लियर टू यू? प्रॉपर्टीज तो वही रहने वाली है जो बेसिक कॉन्सेप्ट. पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस है, और उसमें ट्रांसवर्सल है तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे, इंटीरियर मिलेंगे और ऑल्टरनेट एंगल्स मिलेगा. कुछ और नया तो नहीं आ जाएगा उसमें. तो इट कुड हैपन दैट योर स्टेप्स विल बी हियर एंड देयर. आप पहले इन पैरेलल लाइंस एंगल से कॉन्सेप्ट शुरू करके फिर एक्सटीरियर एंगल लें. मैंने पहले एक्सटीरियर से शुरू किया, सो दैट कुड बी हियर एंड देयर इन दिस. ओके, इसलिए ये इस वाले समय में ऐसे होनी चाहिए. सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स में आपकी सीक्वेंस शायद मेरी सीक्वेंस से अलग हो सकती है. I hope you are getting it. Proving में yes, there has to be one or two ways and there has to be systematic presentation. कि स्टार्टिंग के स्टेटमेंट से आपका लिंक होकर आगे का स्टेटमेंट चलता है, या तो जो डेटा है उसके बेस पे यूटिलाइज करके बनता है. सो द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर यहाँ पे प्रेजेंटेशन इज इक्वल इम्पोर्टेंट, बट ये न्यूमेरिकल्स में ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम कब शुरू करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी से स्टेप यहाँ वहाँ आगे पीछे हो सकते हैं. मतलब विद सेम और यूनिफॉर्म, जबकि प्रूविंग में ऐसा नहीं होता. प्रूविंग में यू हैव द यूनिफॉर्मिटी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फाइन. ओके, सो प्लीज सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स. ओके, एंड मैं इसका सोल्यूशन भेज रही हूँ. सो इफ एनी डाउट्स आर देयर यू कुड डिस्कस विद मी फर्दर, बट पे अटेंशन. ओके, एंड only 42 present. Okay, and the tangible implementation, your teachers will be guided which class in what way will be stated, but please ask your friends to attend the class. Right? Thank you children. Thanks a lot. I'm sending you the attendance sheet.